Hello, dear students of grade 7. Hopefully, you all are doing well. Take out your English books and come to unit number 1, A Light in the Night. Today, we are going to learn unit number 1, A Light in the Night. This unit is all about the history of London and the ancient modern cities. So let's see what is the historical description of this unit. The lesson is a historical account which provides a glimpse about the history of rich nations. London is also included in the rich nations, so it is the historical account related to the England. Um, Along with it, it also provides a historical development in the field of science. It also provide some information in the field of science and provide about London street lamps. So it is a descriptive account of advancement of science and technology. So in this unit, we will able to learn different historical backgrounds about London before 18th century. How was the London and what was their situation at that time? So let's get started. Come to your unit number 1, Light in the Night. Firstly, we will go through to the words to know enforce, to make sure something is done. Enforcement, to make sure something is done. Wick, a string in oil or in the middle of a candle that is lit for burning. Wick. Now here it is talking about a candle. Candle में आपने वो देखी होगी कि एक string होती है जिसपे आप आग लगाते हैं तो वो कैंडल जलती है, चिराग की बत्ती जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात हो रही है. तो दैट्स मीन विक. Okay, take out your pencils and hold your pencils in your hands. London is a major capital city. लंदन इज अ मेजर कैपिटल सिटी. लंदन जो है एक मेजर कैपिटल सिटी है, मीन्स दार हुकूमत है. जैसे कि पाकिस्तान में आप देखते हैं कि हमारा मेजर कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है. सेम इसी तरह लंदन इज द मेजर कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड. एट नाइट, रात में इट ग्लोव्स ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज. रात के टाइम ये बाकी मॉडर्न सिटीज की तरह बहुत ब्राइटली ग्लो करता है, चमकता है. बिफोर द मीन्स सारी लाइट्स जब उस सिटी के ऑन होती हैं, लोगों की चहल पहल स्टार्ट होती है, लोग आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, लैंप्स ऑन होते हैं, स्ट्रीट लैंप्स सब, तो उस चीज को बोल रहे हैं कि एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज. Before the 1700s, it's mean 18th century, London was much smaller than it is now. 18th century में 18th century से पहले लंदन जो है बहुत छोटा था, अब के मुकाबले बहुत छोटा था. On cloudless moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. अच्छा, अब इन ब्राइटली और जो ब्राइटली ग्लोज करती हुई जो नाइट्स हैं, इसमें लोग क्या करते थे, पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट. अब उस टाइम पे लैम्प्स और ये स्ट्रीट लैम्प्स और ये लाइटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट. अब वो जो मूनलाइट का एडवांटेज लेते थे, मीन्स जो मूनलाइट की जो लाइट स्ट्रीट से पड़ी होती थी, तो उसका एडवांटेज लेते थे और गो आउट टू सोशलाइट, बाहर जाते थे सोशलाइज होने. सोशलाइज मीन्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर और आपस में मेल जोल. तो इस चीज को उन्होंने बोला कि सोशलाइज. उस टाइम पे वो मून लाइट की एडवांटेज लेते, वो बाहर जाते थे, मीन्स वॉक पे जाते थे नाइट टाइम. बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस. लेकिन जो नाइट टाइम था सिटी में, वो डेंजरस मतलब खतरे वाला भी हो सकता था. वो किस तरह से हो सकता, यू कुड ट्रिप, आप ट्रिप भी कर सकते थे, फॉल एंड इंजर योरसेल्फ, गिर भी सकते थे, अपने आप को जख्मी भी कर सकते थे. इफ यू फेल इन द रिवर,
सपोज अगर आप रिवर में गिर जाएं, दरिया में गिर जाएं, यू कुड ड्रोन, तो आप डूब भी सकते थे। यू कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड बाय क्रिमिनल्स हु रोम्ड द स्ट्रीट्स। आप जो है क्रिमिनल्स और क्रिमिनल्स के से अटैक भी हो सकते थे और वो रॉबरी भी कर सकते थे जो कि स्ट्रीट्स में, गलियों में घूम रहे होते थे। यू कुड इजीली गेट लॉस्ट, आप आसानी से खो सकते थे। इफ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग चाहते थे कि वो बाहर जाएं रात के टाइम पे, तो वो क्या करते थे? दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प। उनको अपने साथ एक बर्निंग टॉर्च और लैम्प कैरी करना पड़ता था। इफ दे वर रिच, और अगर वो अफोर्डेबल होते थे, मीन्स रिच होते थे, अमीर होते थे, पे समवन एल्स टू कैरी इट, मीन्स वो साथ कोई अपने हायर कर लेते थे और उसको पे करते थे कि वो इस लैम्प और इस टॉर्च को कैरी करे, और देन वो आउटसाइड जाते थे नाइट टाइम। So this was the situation before 1700s, mean 1800, 18th century से पहले जो लंदन की सिचुएशन थी, मीन्स लंदन कैसा था वहाँ पे। जैसे कि उन्होंने फर्स्टली पॉइंट डिस्कस किया कि लंदन वाज मच स्मॉलर देन इट इज नाउ, बहुत छोटा था, जैसे अब के मुकाबले में बहुत छोटा था। ओके, so now what is in the next paragraph? There were many link boys who would for a small fee hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets. अच्छा, अब वहाँ पे बहुत सारे लिंक बॉयज होते थे। लिंक बॉयज में जो काम करने वाले और थोड़ा डिजर्विंग बॉयज होते थे, वो यही काम करते थे। वो क्या करते थे कि ये जो रिच पीपल है, जो रिच क्लास है, उनके लिए ये इस तरह से काम करते थे कि अगर वो बाहर जा रहे हैं, वो उनको हायर करते थे, तो वो लैम्प होल्ड होल्ड कर लेंगे या बर्निंग टॉर्च होल्ड करते थे, तो इसी तरह उनकी हेल्प करते थे और ये उनको पे करते थे। और पीपल सो दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट्स, और जब वो नाइट में बाहर जाते थे तो अपनी टॉर्च और लैम्प के थ्रू इजीली स्ट्रीट्स में देख सकते थे। कोई इनको खतरा नहीं होता था, बिकॉज अंधेरा नहीं होता था। मून लाइट की आपको पता है कितनी लाइट होती है, तो इसलिए वो अपने साथ बर्निंग टॉर्च और लैंप कैरी करते थे। Some of these link boys were dishonest. अब कुछ जो लिंक बॉयज मीन्स जो ये जो काम करने वाले थे, जब इनको अमीर लोग हायर करते थे, तो ये डिसऑनेस्ट थे, मीन्स ईमानदार ईमानदार नहीं होते थे। एंड वुड रॉब द पीपल, और यही उन लोगों को रॉब कर लेते थे, मीन्स उनकी उनकी चोरी करते थे या उनको यही लूट लेते थे। हु हैड एम्प्लॉयड देम, जो इनको एम्प्लॉय रखते हैं। एंड देन रन ऑफ, लीव देम इन द डार्क, और फिर भाग जाते थे उनको वहां अंधेरे में, अकेली रात में छोड़ देते, अंधेरी रात में छोड़ देते थे। By the early 1700s, 18th century के शुरू में पहले, busy cities like London and Paris, ये जो cities है लंदन और पेरिस, had street lamps in some areas। अब इन जो ये जो लंदन और पेरिस है, ये जैसे कि मेजर सिटीज है, इन सिटीज में जो है कुछ एरियाज में स्ट्रीट लैंप्स होते थे। जैसे कि आपने अपने इस बुक कवर में देखा है कि ये देखें यहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स आपको शो हो रहे हैं। सो had street lamps in some areas in Paris, which had street lamps before London। और जो पेरिस था उसमें लंदन से भी पहले स्ट्रीट लैम्प्स थे। द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प वर एक्चुअली लाइट्स प्लेस्ड इन द विंडोज ऑफ हाउसेस। अच्छा, उनकी जो फर्स्ट इन्वेंशन थी, मतलब स्ट्रीट लैम्प्स उन्होंने कैसे किए थे कि उनके विंडोज जो थी ना, हाउसेस की विंडोज थी, वहां पे उन्होंने एक लाइट वो प्लेस करते थे, तो उसको एज स्ट्रीट लैम्प कंसिडर करते थे। पुलिस इन्फोर्स्ड अ लॉ, अब पुलिस ने क्या किया कि एक लॉ इन्फोर्स किया। enforce, as we already have discussed the meaning of enforce, to make sure something is done। okay, to make sure something is done। अब पुलिस ने एक लॉ को इन्फोर्स की, मीन्स लॉ को लाने में पुलिस का रोल था। that said every house had to have a lamp burning in the window all night long। अब हर घर में उसकी विंडो में लैंप होना चाहिए, जो कि ऑल नाइट लॉन्ग, मतलब पूरी रात वो जलेगा। ये उनका वहां पे लॉ जो था, पुलिस ने इन्फोर्स कराया था कि हर घर में एक की विंडो पे एक लैंप होना चाहिए। ठीक है, इफ द लैंप वेंट आउट पीपल वुड हैव to get up to relight it or face being
find. If the lamp went out, people would have to get up to relight or face being fined. अच्छा, अब ये जो लैंप्स हैं, अगर ये नहीं कभी जलते थे या ऑन लैंप्स ऑन नहीं होते थे और ऑफ हो जाते थे, तो पीपल वहाँ के जो लोग थे उनको क्या होता था, फाइन किया जाता था, और समटाइम्स पनिश भी कर दिया जाता था, और फाइन किया जाता था कि ये लैंप्स क्यों ऑफ हैं, और ये क्यों अगर खराब हुए हैं तो इनको ठीक क्यों नहीं कराया गया. So this rule was enforced by the police at that time, and some people started to offer their services as lamplighters. Now what happened, some people started to offer their services as lamplighters. अब कुछ लोगों ने अपनी जो है एज अ लैम्प लाइटर अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दी इन रिटर्न फॉर पेमेंट, और इसकी पेमेंट वो लेते थे. लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस. अब लैम्प लाइटर्स का क्या काम होता था, लैम्प लाइटर्स जो है आउटसाइड द हाउस जो है लैम्प पुट करते थे, मींस वहां पे प्लेस्ड करते थे, एंड मेक श्योर इट वाज लाइट इट वाज लाइट, और इस चीज को यकीनी बना देते कि क्या वो ऑन है या नहीं है. द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर. अब स्ट्रीट लैम्प्स जो थे वो पीपल को इस सेफ फील कराते थे कि अब वो इजीली इस टाइम पे बाहर जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उन्हें कोई लिंक बॉयज हायर करना पड़ते थे. So it is enough for today. Now your task is to look at this box. While reading, observe the lamp posts in the streets. How do they look? Are gas lamps or इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स. अब आपका ये टास्क है कि आपने ये ऑब्जर्व करना है कि ये लैम्प्स जो हैं गैस लैम्प्स हैं और इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स हैं, एंड रीड इट ट्वाइस. Therefore you will go through to the its main points. Thank you.